Hey guys, welcome back to the I Hello. Exist to Spite podcast where we talk about whatever We we have no want to. intro. We have no intro. I'm Then doing the freaking leave intro. the Shut nahi, up. I'm that doing the intro is intro. awkward as hell. एक सेकंड That चुप कर intro जाओ. never works. We नहीं, mess it up चल every रहा है, time. We चल just रहा say है. we have no intro. Cue Before the we intro start, music. before I do that, no. Before we start, make sure you've subscribed and press the bell thing, and also follow us on Instagram at I Exist to Spite for clips and updates and other useless stuff. Sit back and enjoy the episode. Now roll the intro music. Anyways, Assalamu alaikum. yeah, we already did that. ख्वातीनो See, हजार this खुश is आमदीद this आई is this एक्सिस्ट is टू this is स्पाइट why के I was 8वें saying. एपिसोड में Yeah, तो Manjat, why are you doing an intro? भाई कर लिया ना Zen awkward as hell अजीब सड़ा हुआ सा intro. भाई ब्रांड है Why do हमारा you even try? अजीब Brand? क्या? It's what क्या? is the Excuse me, brand? what the awkward hell did he just say? awkward and Hopefully- shitty is our Tell me the brand. brand. होपफुली 10 years from now we'll be on like टाइम स्क्वायर के बिलबोर्ड्स पे होंगे हम लोग. ये देखो Oh. उम्मीदें Yeah, नहीं speak for करते yourself. वजाहत Speak for उम्मीदें नहीं yourself, करते देखो Ajahad. Speak for देखो Okay, yourself. honestly, I as the wish that 10 as years the from oldest now, person we have a here good recording equipment. as at the least. oldest person here let me 10 tell you उम्मीदें नहीं रखते किसी चीज के बारे में भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए life gives Listen to you the fossil guys. Also, And listen to by the- the way, listen to by the the way, Nothing. 10 years is stretching it. एक साल बाद हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में होना है, फिर उसके बाद हमने ये देख के हम सब लोग क्रिंज एक कर साल रहे थे. में- मैं हाँ, seriously, like it's so weird. पिछले साल की तस्वीरें देख के हम like, you who was that? So हमने यही कर ले. यहाँ पे So तस्वीरें इतनी थोड़ी आ hopes रही नहीं हैं रख दी. तुम्हारी तो तो एटलीस्ट अब नहीं आ रही है आवाजें और Yeah, बकवास we ना. used to do that. हाँ तो नहीं मतलब हमारी memories आवाजें और यार हमारी फालतू memories बकवास. in a year from now when we have maybe 100 subscribers we'll just give up we won't be cringing we'll just give up on this Like at Honestly, this we won't point even मेरी care. बहन Like, का at that मेरी point, बहन we का won't आर्ट care. अकाउंट जो उसने एक हफ्ते पहले बनाया था that I have no idea about that has more followers than our podcast so then yourself. बोलो सही Honestly, है हमें like- वो करे एक मिनट वैसे by the way, honestly, like you can cut this part. लेकिन how do people get 1,000 followers in a week? Please tell me. they don't Buying Uh, them. Buying People them. buy No, them don't buy them. or नहीं. they Yamna, actually I know post content and exactly. people want to watch. नहीं Yamna, I know Like, one of exactly our who you're friends talking started a about physics and I'm page. telling you those followers were bought. नहीं Half of them क्या at हो गया least. नहीं. Like one of my friends started it anyways and before we 1,000 get followers. cancelled by How does another that happen? random fandom Random fan Abis- Roy. Hello. Abis has joined us The Laugh Hey. Master. The Laugh Master तुम्हारी Abyss. Abis लाइट नहीं चली जाएगी आधे घंटे में हाँ तो आधे घंटे के लिए तो सही है Electric. यस अल्हम्दुलिल्लाह Also, हमारी can we अपनी just electric appreciate company. कि आज बारिश होने के बावजूद लाइट नहीं गई? मेरी गई है Oh my मेरी God, लाइट yes. चली गई थी. Electric? क्या? मेरी चली गई थी for जिंक्स कर दो पता नहीं रैंडम चली जाती थी और ना आज भी वैसे मेरा स्केड्यूल है 10 से 11 मेरी लाइट जाती है. आज चली गई 9:30 पे और अभी 10-15 मिनट पहले ही वापस आई है और अभी 10:30 हो रहे हैं. हाँ तो 10:15 पे. So it's weird. ईद हमारी के usually लाइट उसमें जाती नहीं. Oh shit. कोरोना जैन तुमने क्यों बकवास की थी कि मुझे खांसी हो जाए? मुझे लिटरली ईद- 3 दिन से खांसी नहीं हुई है, नहीं, अभी शुरू हो गई है. आगे बढ़ो Zen- Zen was व्यूअर्स about को to नहीं just- अलर्ट नहीं करना किसी चीज के बारे में तुम्हारी खांसी को मैं ब्लीप कर दूंगा अच्छा नहीं. ईद के उसमें हमारी लग रहा था कि लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म हो गया लेकिन चल रहा है अभी भी। हाँ 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 यार I low key miss load Eid से shedding पहले खत्म वाले हो। दिन. I low key miss Eid से पहले वाले दिन because I had like the best 1 week Eid से पहले and now it's just shitty again. Why? यार जानवरों की बदबू इतनी थी और now Yeah, they're all gone same. so I feel better. Okay, I have a rant. I have the rant. I have Yeah, the yeah. rant. I must. Okay, D rant. May I? go ahead. Yes, No. please. Okay. This is gonna If be I a say long. no, will you shut up? If Yes, I say after no, the will rant, you I shut up? promise I will shut up. Okay, no rant. Okay. No ahead. No rant or yes rant? Yes, No rant. ahead. No Yes, ahead. rant. I said no Okay. rant. यार देखो मैंने आते ही बोला था अगर किसी ने मेरी आवाज की मजाक what
किसी ने तुम्हारी मेरा आवाज मेरी की आवाज मजाक का नहीं उठा मजाक उड़ाया, रहा। मैंने चमाट मारना है। आई एम सिक। मजाक सही का है उड़ाया। यार। देखो यार, ये जैन को कोई नजला वजला कराओ ताकि फिर उसके बाद इससे पूछेंगे ओ कि हाउ डज योर फल्लाह, I हेड don't वर्क्स get देन। sick. काला I don't जादू get चल sick. रहा है यहाँ पे और कुछ नहीं। अच्छा, ही Honestly, डजंट गेट like, सिक। don't talk कोई about कोई मुझे that over उबर कराए, here मेरे पास पैसे at नहीं है, this उबर point. कराओ जैन के घर की, मैं जाके उसके पास छींक के खांस के आऊँ, वो भी ओ बीमार हो अभी। भाई, तुम्हें मेरी बिल्डिंग में नहीं आने देंगे। मैं मास्क पहन Anyways, के आऊंगी, लेकिन okay, फिर rant. अंदर आके मैंने तुम्हें बीमार करना है। शश, मामा मैं जा रहा हूँ rant, please. म्यूट जाओ। करो जैन को कोई। So, I am जैन the को उसके host. बाद हम I कर mute देते you all. अभी mute करता हूँ, यार, आबिस को मैं रुको जरा। ये कर why दिया are मैंने। the most immature people the hosts? हसनैन और जैन को कौन देता है ये पावर? Why Because do we do यार this कि every time? यार क्योंकि हम I am मैच्योर king. पीपल को मीटिंग बनानी नहीं आती, नहीं, मुझे because आती है, mature but people know. I don't have the तो बनाया करो time ना to जी। record the shit देखो, and send it. mature people हाँ, know वही तो। कि इसमें टाइम जाया करना फालतू है, ठीक है? तो अल्लाह। the immature people are like कि चलो पॉडकास्ट करते हैं। I'm gonna But ignore. did you just shade all of us except Aliza because she left? I'm gonna Aliza is the move most on. mature of all of us. Who would have thought? Not me. Anyways, can I please rant before? Please. Yes, please. Yeah, Please then rant. either go and do it or shut the fuck up. Okay, I'm okay. तुम लोगों को पता है और viewers को भी पता है कि या listeners को भी पता है कि I'm gonna be moving to Canada pretty soon. Because I've like said it a million times on previous episodes. Like, Like, the world knows excuse about me, this at this point. sorry to interrupt, but at this Oh, point, Canada. हसनैन का bastard middle child और जैन का Canada move कर जाना, it's every episode की बात है। Yep. अब move on. Yeah. आगे Anyways, बढ़ो। हाँ, तो if like you know me, if you know me since like We wish we बचपन didn't, से, but I'm okay. a pretty big, huge, Oh. patriotic guy. Okay, I love Pakistan. I love my Pretty country. big, huge asshole. More like. I Even said though like you patriotic. rant about Okay, Pakistan every can you time, but stop? okay. Yeah, but I Stop. rant out of love. Let the man take out his feelings. Yeah, I love this country, and I love this city in particular. I grew up here. I was born here. I grew up here, and I always used to think, "Ke, if I move, I'm not gonna be happy because I'll always want to be in Pakistan." And I used to think कि एक दफा पढ़ाई हो जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगा और यहीं पे रहना है, यहीं पे like family भी यहीं पे हो, सब कुछ यहीं पे हो, सही है ना? लेकिन in like recent days, my experience with like trying to, and because I'm that patriotic, I've always tried to do stuff for my country, do stuff for my community and for my people. इसीलिए मैंने फिर कुछ अर्से पहले, 1 साल हो गया एक्चुअली, TRGR जब शुरू की थी। TRGR is the Real Green Good Revolution. memories. एक लोगो लगा देना, हमने और मेरे दोस्तों ने, हम सब ने, एक्चुअली उमामा और Good यमुना और आबिस memories. भी थे, हम लोग सब ने एक मारिया। ऑर्गेनाइजेशन शुरू मारिया की भी थी। थी, मारिया भी थी, मारिया हाँ। भी थी। हम लोग सब ने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी फॉर क्लाइमेट चेंज, फॉर क्लाइमेट एक्शन. इट काइंड ऑफ we did what we could anyways, जो भी, और आजकल हम फिर वो एक we progressive did what Pakistan we वाली could. चीज It कर was रहे हैं. fun at the. It was fun fun at the and start. we learned stuff. That's what I've been telling myself. We learned a lot. But Yep. I can't And help we learn it. never start an organization in your college, please. Yeah, Never. whatever. and Anyways, never let's not think get into about that. passing it on. Yeah, that's I'm still salty. Not a Umama चुप legacy. करो, Umama shade ही नहीं throw करो यहाँ पे. Okay, anyways, I am still salty. Moving I on. cannot help going forward कि it all didn't exactly work out the way we wanted it to, right? And I feel defeated, and I feel like, जैसे नहीं हमारे पेरेंट्स, अक्सर मैं रैंट करता हूँ कि हमारी ओल्डर जनरेशन जो है वो अक्सर कहती है कि कुछ हो नहीं सकता है इस मुल्क का, क्या जो है फायदा? वो है, राइट? हाँ, क्या हाँ, फायदा क्या वाली फायदा वाला? वाली मेंटालिटी. I feel like I've fallen into that because like 2 days ago I was ranting to myself, right? I don't have a lot of people who are free right now to talk to, so I just You don't have friends. think, Moving on. yeah, not right now I guess. लेकिन मैं दिमाग में सोच रहा था ना, and I came to that कि do we as a people even deserve saving or help or anything that is better than what we are right now? मैं कुछ अर्से पहले like परसों डेंटिस्ट के पास गया था और मैं
उसके बाद पता नहीं कजन को पिक करने गए थे, तो वहां पे हम वेट कर रहे थे उसकी ऑफिस के बाहर, और सामने पूरी स्ट्रीट लिटरली कचरे से भरी हुई, और इट रीक्ड, एंड इट वाज लाइक अ रेजिडेंशियल एरिया, एंड देन देयर वाज दिस कंपनी वाली बिल्डिंग, एंड आई फेल्ट लाइक आपके जो जो अक्सर हम पूछते हैं ना कि मसले क्या हैं, बस हुक्मरान ऐसे हैं, इमरान खान, बिलावल भुट्टो और एमक्यूएम के कारकुन आके आपकी रात में हर रोज रात को कचरे फेंक के जाते हैं आपकी सड़कों में। ये सारे काम कौन कर रहे हैं? आवाम ही कर रही है। एंड लाइक हाउ डू वी इवन चेंज them when they're unwilling to listen to anyone who is trying to save them? जब हम उमामा, तुम्हें याद है जब हम लोग शुरू में सब लोग को वॉलंटियर्स जमा करने की कोशिश कर रहे थे हाँ। टीआरजीआर के लिए, अक्सर लोग बोलते थे कि क्या कर लोगे तुम लोग, करना ही नहीं हाँ, चाहते उसके हो, अलावा Honestly, I do remember नहीं, effort और ही नहीं people would लगाना say कि चाहते तुम खुद लोग से। क्या कर लोगे अगर हम एफर्ट पुट भी करते हैं, nobody else is gonna do it, और फिर वो अपने नाम लिखवा के जाते थे वॉलंटियर करने के लिए, and they wouldn't show up. Exactly. Like, वो एक जो genuine passion होता है ना कि I want to do something about this, this is a problem, we need to do something about this, वो है ही नहीं। but to be honest, during quarantine, इतने सारे issues have been going on simultaneously during quarantine, और फिर like there is this sense of helplessness or hopelessness quarantine के दरमियान, and it made me like question genuinely about like passion. Like agar if like we have like Pakistaniयों में like we're the young generation, बहुत like young generation जो है हमारी, that's the prominent population के अंदर like सबसे ज़्यादा what I'm forgetting the word. खैर हमारी population young ज़्यादा है, and like genuinely we lack passion. हम जितना भी बोल रहे adult generation को कि they are doing nothing और ये वो, we can make a change if we want to, but we lack passion, or it has become so evident. Like even But corona Mama, के I अंदर जो think we lack scene चल रहा passion. है, We lack passion because that's what we've been taught. I don't know why I'm yeah, like the way I am, देखो, but the thing parents with are. passion is nobody can teach you passion. People can teach you how to put that passion into action or what to do with that passion, but nobody can teach you passion. It's something you have, and I feel like that is something that we've lost. क्योंकि यार मतलब in light of recent events, it's become pretty evident that like हम कितना भी बोल लें कि oh my god ये लोग कुछ नहीं कर रहे, वो लोग कुछ नहीं कर रहे, at the end of the day हम भी कुछ नहीं कर रहे. That's what I've been लेकिन feeling. That's quite अमामा the point is कि मेरे ख्याल से हम लोग की जो पूरी पॉपुलेशन है उसको स्पून फीडिंग हर चीज की इतनी आदत हो गई है, like they expect कोई और तो कर देगा ना, तो हम क्यों करें? हाँ, वो एक होता है ना Yeah, सेंस spoon feeding is a lot. ये Spoon feeding सियासतदान is वो कोई और करेंगे कर देगा ना, खुद, अगर हाँ. अगर ये यही मसला है तो होता खुद है यार हल नहीं कि मतलब करेंगे। seriously ईद के आवाम दौरान जो है वो बोलती ईद के है कि दौरान गवर्नमेंट कर देगी, और गवर्नमेंट समझते हैं कि आवाम खुद से कर देगी बिकॉज दे थिंक दैट वी आर सेल्फ सफिशिएंट, और जिस तरह से फिर एंड में कोई कुछ नहीं करता और फिर ब्लेम गेम चल रहा होता है, तो यार दिस एक इज तो रॉन्ग। ईद के दौरान I एक want to हद say तक ईद के सेल्फ दौरान we सफिशिएंट होना always have चाहिए। this problem with के जो entrails वगैरह जो like बाय प्रोडक्ट्स कुर्बानी के वो लोग छोड़ के चले जाते हैं, एंड like बाय the प्रोडक्ट गाड़ी कुर्बानी never के। yeah they are the products. my vocabulary is shit right now, do not let's question it, explain moving on. that हाँ. to let's explain this problem to our The listeners. intestines अगर and आप stuff. कराची में नहीं रहते या हाँ. या कोई मुस्लिम कंट्री में नहीं रहते, if you don't live in a Muslim country, every Eid al-Adha there's a sacrifice of animals, qurbani it's called in Urdu, and after that's done, in other countries that are better than Pakistan, usually the entrails and other stuff is thrown away in a proper place, and या the फिर government सिंपली ऐसे or वहाँ some पे other जो वो in Yeah, the I think बाकायदा slaughterhouse. there's a जे proper हाँ place. one at a slaughter time. Okay, houses और okay, but big whatever, cages वगैरह it's होते हैं। collected and it's discarded in a safe way because health it can stuff. cause a lot Can of be infection Yeah. if it's not done properly. But Yes. in But Karachi or and in Pakistan, there is no system for that. So every Eid al-Adha, there is just awful. There's this awful And Not this time smell it was all exactly over the worse, I street. think. Pakistan, नहीं देखो, not this time exactly let me Pakistan, tell you what क्योंकि happened like this time. Like usually the problem is ke either that I don't know if there's a public organization or whatever, they come and collect all this and they take it away, and they usually come like at a certain time every day for like the 3 days of Eid. And this time they came twice, once in in the early morning and once in the afternoon, and like they took everything away, they cleaned it away first, then pehle din tha, it was good.
second day they came, they took it, और उसके बाद people were literally बाद में आके फेंक के जा रहे हैं, and they are not like even covering it with something. मतलब ऐसे ही यूं literally फेंक दिया गली के बीच में, not even putting it at a side. और फिर like people are saying, oh गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही, बारिश होगी तो क्या होगा. Dude, discard it safely, like किसी चीज में कवर करके कोने में. वो गाड़ी literally 2 दफा आ रही है. Get a brain. आपने अगर कुर्बानी लेट की है गाड़ी के जाने के बाद, जस्ट सेफली उसको कोने में डाल देना. बीच में कौन रोड के डालता है? रात ये ईद से कराची पहले, में ईद से एक दिन पहले लोग लाइक गाय वाय घुमाए थे, ऑल द थिंग्स गोइंग ऑन, लाइक लिटरली आपकी गाय बीच में लाइक दिस गोबर, और फिर उसके बाद वो चले गए आगे. यू पिक इट अप, लाइक मतलब सीरियसली किसी के घर के बिल्कुल सामने, if it happens you just pick it up, कोने में डाल दे या मतलब साथ ले बात जाए. असल में but ये है कि कराची के नहीं, उसमें वो एक भी नहीं करना. मेंटालिटी और बन फिर गई उसके है कि बाद अपना घर की जो बाउंड्री है ना अपना उसके घर बाहर साफ जो भी करो हो. और फिर उसके बाद बाहर कचरा कर दो सारा. एग्जैक्टली. अबे तुम हाँ कुछ बोल रहे थे? हाँ मैं ये बोल लिटरली रहा था कि हमारे तुमने घर के कहा था करीब एक, कि पूरे पाकिस्तान के जो बात है, लेकिन पूरे पाकिस्तान का नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जो लास्ट बकरीद हम लोग इस्लामाबाद गए थे, तो ईद बकरीद का सेकंड डे था, और वहाँ पे जन लाइक हर चीज Yeah, बहुत very साफ well. थी, वहाँ पे एक खून का ड्रॉप भी नहीं था रोड पे. तो बात Islamabad, पूरे I don't know, it does पाकिस्तान not की even नहीं है. feel like. नहीं, नहीं देखो इस्लामाबाद इस्लामाबाद सिर्फ की बात नहीं है, इवन उसकी कराची के कंट्री अंदर नहीं, लाइक उसका जो रूरल पार्ट भी नहीं है ना वो भी बहुत साफ सुथरा था. Like सो आई थिंक द even प्रॉब्लम इज it's not about Islamabad या anywhere else. even कराची में it varies wildly from like area to area. बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे लाइक आप ईद के लाइक दिन बीच में भी चले जाओ, कुर्बानियां हो रही होती है, बट वो सफाई से कर रहे होते हैं. बट लाइक जो होते हैं ना क्राउडेड एरियाज, जो सेंट्रल कराची के एरियाज, आई फील लाइक वहां पे दिस प्रॉब्लम इज वर्स. honestly though, डिफेंस like वगैरह की साइड talking पे ये about प्रॉब्लम नहीं हो रही होती. like But that's a comparing the different story. entire other cities of Pakistan or for Islamabad, I don't know how they manage that place. Like if they can actually Yamuna, it's a manage that capital. place, they can Yamuna, manage it's a capital. It is supposed to be still. like the best representation. हाँ वैसे So That's ट्रू not if true. दैट है, they Like can क्योंकि make पूरे it the पाकिस्तान में best बेसिक in systems क्यों नहीं हो सकते governance के? कराची की government can literally, city government can do literally nothing. They have no power. I don't understand what the mayor does even every I day. think Lahore is Why he even something has an office somehow is better. beyond me. Yamuna, Lahore is a lot Honestly, better. Except Lahore food. is so much We have better better. food. Lahore was for 5 uh, Even years like the de festival, I कराची facto go to capital festival, of it's so much Pakistan better. आई for थिंक weekending. कराची That's के why. लाइक अंडर डेवलपमेंट का पॉइंट वो इस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि कराची इज टू ओवर पॉपुलेटेड, तो अगर वो कुछ It's करेंगे भी तो extremely overpopulated. सबका तो नहीं कर सकते ना. तो आई थिंक दैट्स पता है काइंड ये ऑफ देयर मसले हैं ना, जस्टिफिकेशन ये कि सारे अगर यार मसले एक हैं ना, पार्ट में करेंगे तो देखो बाकी सारे बोलेंगे. इन मसलों से आगे भी निकल सकते हैं ना कि हल बताएं. अब जैसे फॉर नहीं तो वही एग्जांपल तो हल बात है. है ना. अब ये सिर्फ I मसला do नहीं है not ना. understand. I do दे not ट्राई टू फाइंड understand. इट एज एन एक्सक्यूज रादर देन अ प्रॉब्लम. लाइक वो उसको ये एक्सक्यूज बना लेते हैं कि जो ताकि उन्हें खुद कुछ ना करना पड़े, एक कि बात लाइक बताऊं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ओवर है तो पॉपुलेशन एक है, हिस्से में करेंगे तो that बाकी is an सारा issue. कर. That is an issue. But what we can do about this further, पॉलिसीज आगे रखें ना. अब हमारी पॉलिटिक्स और जो भी वगैरह है, मैं ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन if you're familiar with Pakistani politics, most of it is just you're corrupt, you're lying, you're corrupt, you're lying. That's it. NRO yeah, दैट्स बस इट. फला basically फला like फला एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ती. blame करना just because उनकी reputation खराब कर दो, नहीं हमें ना, votes नहीं मिलेंगे, ब्लेम बस करें, ये. लड़ें एक दूसरे को मार डालें, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पॉलिसी पे तो डिसएग्री So करो. that's not a good way to say. I will end corruption Yeah, अमामा is not a I feel frigging like policy. लाइक politics Pakistan के अंदर they have become a lot about reputation of individual party leaders or parties more than their policies. It's just ego and rhetoric. There's nothing हाँ. more in. हाँ एग्जैक्टली. Anyways, और let's get सिर्फ to the रेपुटेशन वाली. Honestly, what my like point was and that because of all of these. uh, यमुना एक second, यमुना तुम कुछ बोल रही थी? no, you continue. हाँ, तो what my point was is कि because of all of these issues and the fact that we tried to do something and we succeeded in some ways कि हमने at least awareness थोड़ी फैलाई और खुद effort किया, लेकिन in other ways the way we thought we should be doing उस हिसाब से हम fail हो गए. And I feel more defeated than ever, and as I'm moving into the final weeks of me living here as a resident of this city, I feel like there's no
redemption for this city. It's done. You won't be going away from here with good memories. Exactly. I feel like this was not, at least I wish अगर मैं जा रहा होता ना, तो I wish I had something like, for example, देखो सबकी families नहीं होती that you bond with, सबके friends नहीं होते. एक चीज होती है ना, एक concept है जिससे you define yourself, right? I used to define myself by my patriotism, by my passion to do something for my country and my people, you know. And now that I'm leaving, I don't have that anymore because I'm just so angry and so, again, defeated. Okay, it's just gone, and this is the worst possible way it could have been. Anyways, that's just how I feel these days. Honestly, वैसे like even talking about beach cleaning जो हमने की थी, it did not. I don't think उसका effect lasted for even 2 hours. हाँ, definitely. Like beach cleaning के वक्त It मैं did सोचता था not. कि it Even would be so the much better entire if we day were able to dustbin over fight there. for like a policy के like city government जो है वो एक special organization बनाए है वैसे CB पता नहीं क्या कोई that is responsible for cleaning I up the don't think they beach. do anything. I mean, they Because Yeah, are supposed देखो, to, but I like feel like even though we did not achieve what we were aiming for, at least We we tried. did something about it. We tried. हाँ, at Like least कोई I attempt तो था ना. I get why you're feeling like this hopelessness के भाई हमने इतना effort put किया, we did so much, और फिर उसके बाद it resulted into nothing के, but at least you did something ना. At least you took initiative instead of just saying oh इसका कुछ नहीं हो सकता, और क्या कहते हैं I wish के हम लोग initiative ले या government कुछ करे. At least it's better than that. You should at least feel that के But I would say like actually creating some change, it takes a lot of time. it And does. a Honestly, lot of time. I'd like to Uh, put it out there that Zen, it's like your hopelessness. I think it's because that you're expecting too much out of yourself. Because honestly, इस मुल्क का 70 साल से कबाड़ा हो रहा है और तुम एक साल में उसका कुछ नहीं कर सकते. It's going to take time and it's going to take a lot of time to make progress. क्योंकि जो कुछ भी कर लेंगे प्रोग्रेस आएगा तो बहुत ग्रेजुअली आएगा, शुरू में पता भी नहीं चलेगा. लेकिन अगर कांस्टेंट रेट से जो है ये चलता रहेगा ना तो फिर एंड में फाइनली कहीं जा करके कुछ सालों के बाद फिर प्रोग्रेस नजर आएगा. So it's not ये पता है exactly क्या? कि जो कुछ भी किया it When it was in comes to vain. when It's it like comes to like what we were fighting for then, like climate change, हाँ I understand कि बाकी सारे issues में like social issues हैं कुछ, उनमें time लगेगा thinking change होने में लोगों की. कुछ दूसरे economic issues हैं उसमें policy implement होने में फिर time लगता है. With climate change, we actually have a timer that we're running out of time and we needed change now, you know. but And if honestly not in climate policy change but if in attitude, maybe like the हाँ nonchalantness of Pakistani people about climate change is beyond me. As a Muslim, at least यार I thought कि लोग जो है वो ज़्यादा conscious होते हैं कि like this is your responsibility to make sure nothing happens to this earth. अमानत कहते हैं इसे, ये अमानत है हमारी. but then yeah, but honestly then again climate it issue is brings it. more of a global issue than like नहीं, a उसके अलावा country देखो wide then thing. then then So yeah, I feel like इसके बारे में I have two things to say. पहली बात तो as I said in like first या second episode, like लोग ना इस्लाम हम मुस्लिम हैं, हम इस्लाम को पूरा फॉलो करते हैं, they say this a lot, लेकिन फिर उसके बाद बहुत सारे issues पे when it doesn't concern them, वो उस issue को like they disregard that issue. और climate change और मतलब how to take care of like your fellow people भी, और उस issue पे that happens a lot, especially हमारी community में. और दूसरी चीज यार I feel like climate change की तरफ like Pakistan does pay like very little, but like they do pay a little attention towards that. लेकिन यार again media वाला जो scene है कि they only show you the bad news वगैरह वगैरह, क्योंकि recently हमारा जो Paris Agreement के जो goals थे, Pakistan reached one of those goals a year prior to the actual commitment. और जो tree plantation drive जो चल रही है, we're Yeah. close to planting I believe a billion trees or a million trees. I have no idea.
but we're close to that goal as well. So wo bhi nobody is talking about that. Though honestly I think that's an issue for Pakistani media, like वो हर चीज का Yeah, it's फसाद not वाला just about पॉइंट Pakistani दिखाते media, हैं. it's just about It, media in general. Media in general, नहीं खास नहीं, तौर पे not these not days. exactly, like if I'd like if to like explain this जो point उमामा के ने बताया बाकी. हाँ, नहीं आप बस बोल दो, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी. अच्छा, like I'd just like to point it out कि like Pakistan में media is a sort of entertainment, like हर चीज का फसाद वाला point जो होता है ना वो मीडिया में दिखा रहे होते हैं. और बाहर जो है जैसे यूएस या यूके वगैरह में जो है, अगर कोई बहुत बहुत ही ज्यादा कोई नेगेटिव चीज होती है ना तो उसे उसको प्रोपेगेंडा नहीं बनाते, उसको बिल्कुल हश हश करके रखते हैं. तो वो अमूमन मीडिया से नहीं, वो इंटरनेट से पता चल रहे होते हैं न्यूज़. तो अबे आई क्या, और थिंक even दैट्स अ आबिस सॉर्ट एक ऑफ बात, पॉइंट. और आबिस के पॉइंट को ज्यादा आगे बढ़ाते हुए मैंने नोटिस किया है कि इंटरनेशनल मीडिया और फॉरेन मीडिया में, अमेरिकन या लाइक ब्रिटिश मीडिया में, तुम लोगों ने नोटिस किया अगर ब्रेकिंग न्यूज की कोई क्लिप देखी हो यूट्यूब पे, हाउ काम दे ऑलवेज आर, यू नो. उनकी जो लहजा होता है वो हमेशा एकदम एक मोनोटोन होता है, वो एकदम आराम से बताते हैं, और इसका एक रीजन होता है, क्योंकि मीडिया का काम सनसनी inform या करना है. इंसाइट करना नहीं होता, लोगों को घबरा देना नहीं होता. इट्स टू मेक श्योर दैट पीपल स्टे काम, दे इन्फॉर्म्ड बट काम. यहाँ पे कैसे और I होती है, feel छोटी like सी और न्यूज उसके अलावा आपको बताते चले कि ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है कि बिल्ली ने गाय भाग जंप गई. मार दी है दीवार से. वही गाय तो भाग like गई. like छोटी न्यूज को media इतना is a बढ़ा sort चढ़ा of के कर दिया entertainment. कि कोई एक छोटी खबर entertainment की इस्लामाबाद में तरह ही हुई है. हो और कराची की आवाम जो है वो सड़कों पे निकल आए. और हाँ ये exactly, like एक अलग बिल्कुल ही मसला है. हम लोग बहुत लंबी रैंट जा रहे हैं पाकिस्तान की, लाइक हेट. ये भी समझे कि एक बात बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर कल्चर की कोई भी बुराई करते हैं, लाइक देसी कल्चर की बुराई करते हैं कभी कभार. हम अक्सर बच्चे, लाइक हमारी जनरेशन के लोग सोशल मीडिया पे कर रहे होते हैं कि ये खराब है, वो खराब है, दिस नीड्स टू गो. हमारी एक this टीचर ने एक दफा definitely हमें बोला था, needs to देसी go. का मतलब होता है प्योर. आप लोग बस वेस्टर्न लिबरल मीडिया इनटेक कर करके जो है ना, आप ये देसी हमारे प्योर कल्चर से भाग चुके हैं. हमारी बात तो सुने कि जो आप कर रहे हैं वो मेंटल हेल्थ इश्यूज पैदा कर रहे हैं. जो आंटी वाला कल्चर है देसी, जिसे हम देसी कल्चर बोलते हैं, दैट is toxic, Like that is I bad. feel like कि It's even desi in some, culture और it like is actual unethical. Pakistani cultures को ना like we mix it too much with like toxic aspects. We focus too much on the toxic aspects और फिर उसके बाद that's all we talk about. Oh desi culture में ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है. और देसी कल्चर में that's अच्छी चीजें basically हैं, बट और इस you know what, तरह I से feel like और इस तरह से करके जो है ना देसी कल्चर को एक टैबू बना दिया है. like anything desi is kind of negative. मैं ये मेरा पॉइंट ये था कि मतलब क्रिटिसिज्म लेना नहीं चाहते ये लोग. लाइक क्रिटिसिज्म makes things better. Like I criticize, like यमुना ने शुरू में बोला था कि मुझे पाकिस्तान, आई एम पेट्रियोटिक अबाउट पाकिस्तान, इसके बावजूद मैं बड़ी बड़ी रैंट्स पे जाता हूँ, लेकिन that's because I love this country and I want things to be better. I wanted at least things to be better when I hoped that things could be better. Anyways, आगे बढ़ते हैं. Okay, honestly, wasn't I it feel better. supposed to be like a scary episode? And नहीं ये वो वाला नहीं है. वो वाला असल में अच्छा. and then now we are just ranting about aunties and cultures. It's Yep, good. This is what they come for. But we there are is a letting our horror themed patriotic episode in side the thrive. works that I have not been able to plan fully. I am so sorry that I'm being so distracted by other stuff lately. Okay, part 2 start यहाँ पे. ओ मामा, start the script. Script के हिसाब से चलो. यार मैं जितना कम बोल सकती हूँ मैं उतना कम बोलने की कोशिश कर रही हूँ. मेरी वॉइस बहुत अजीब हुई है. You guys do it. That is such a farce. Like you never speak less. हाँ मतलब चिल्ला के जो है ना पूरे सबको खत्म हाँ हो तो जाती मेरे है. गले में दर्द हो रहा है ना भाई. यार ये जहर को कोई बीमार करे, इसको पता ही नहीं है यार कैसा होता है बद्दुआएं जब ना नॉर्मल दो. लोगों की मैंने तबीयत सुनो खराब होती है. मामा, अच्छा सॉरी. हमने हाँ जाना बाय है. द वे full नोबडी off, मैंने full जाना off है. वाला मुझे जादू जाने चल नहीं रहा है. देंगे, प्लेन पे नहीं चढ़ने देंगे वो मुझे. लॉल. ओके ठीक है. Anyways, ज़ेन आई विश यू डोंट वैसे fall sick हमारे but okay. we started with 5 people, now we're down to 3. This is Bajaj crazy. and हम done left. Yeah, they just Bajaj said just this left is not worth it. randomly. Anyways, I was thinking we could read comments from one of our Because we're out of viewers. content. We don't Or even the have Kind of enough. weird. We don't even have enough क्या कहते हैं comments to read. Lol. Maybe I think let's we have give 4 someone a comments. shout out.
the first, like, I think someone who like listens to our episodes regularly is this guy. I think Wajahat even knows him. Hamza Abdali. Abde Ali. I am so sorry. Abdali. Why are you Abdali. Arvi butchering know his them? name? Is it मुझे नहीं Abdali? पता Are कैसे. we know them? Wow, nice to do it. Are we friends with this person? Is he at our school or something? I have no I idea. wouldn't know Zain. I know Anyways. 5 people. He listened to the entire episode, which is crazy because even Umama hasn't listened to any single one of our entire episodes. I have. I haven't. I Lekin heard he heard the a entire few thing, episodes while doing something. and he I don't did know this what whole was it. comments conversation thing that I loved. It took me a month before I could acknowledge it on like an episode, but I read every single one of his comments and I enjoyed it. It felt like we were having a conversation. Like he was Nice. responding to every conversation we had in the episode, and I loved that. Please do that again. Okay, yes. that's sweet. Yeah, sweet. Some also other person Okay, read also the comments commented. out. Let's. Oh, you okay? Yeah, Zain, we do not want a commentary on the comments. Just You remember when we were talking about PUBG being halal or haram in the first episode? He said yes, PUBG halal. And Wajahat in the underdeveloped areas, they go out because I can't read his comments because Then they're shut the related fuck to up. the conversation. Okay, whatever. Other I person am said. going to go find them. One other person said the F word. How TF did I not know about this before? Shit, I love this. Wait a second, why do we have 54 comments on our first episode? that like, was- when did that What? happen? Ooh. Maybe Ooh. we can have I need Hamza to on see the that. show. I need to see Okay, that. okay, He's okay. more कितने interesting okay. than comments? you, Mama. Shit. Okay. Kya what? I'ma be liking all of his shows. All of his. I'm liking Hamza's Then shut up. Let me see. I want to hear your podcast because literally this is the best decision in 4 months. It's good to hear some familiar voices like Wajahat and Zain, and honestly, this might just keep me sane for some time. Oh my god, that's the sweetest thing anyone He said has ever Wajahat said and Zain, about not this. you. About this Shit. podcast, Zain. I actually have friends in real life, Zain. I know you can't relate. And they have said good things occasionally. Okay, whatever. So, yeah, you stoke your ego with random comments on the podcast. I have better things to do. Shit. Okay. सही Oh, है it's the same guy. It's the same guy. He has like, okay, let me read all of them. I Okay. know, right? Like Yes, एक the एक ही competitive बंदा में spirit is everywhere, even in football. Oh my god, football! Do not I'm remind me telling about you, football. this is It's going to be bringing so back stupid in an depression. episode. Anyways, let's. Okay. Maybe this is a good. Can we talk about how weird this season of football was? Like, No, because I don't follow football at all, and I don't think Abel does. Same. either. it's not about you. Same. Yeah, literally, you guys are the worst. Like, It's about. you have It's not no about taste. me, but it is about us. Communism. Yeah, not. Majority rule, Mama, you can like get lost. At this point, anything is better than capitalism. Anyways, Do not come after me. Please do not kill me. I don't want to die, but maybe I do you want to dirty die. commie. Yeah, kill me. I don't care. Okay. The hell. Communist, Troikist. Anyways, Like Zen sounds this is a like, good place. okay, This is I'm a not good gonna say place that. to end this. And it This was such a and weird her life. episode. End my This was life. such a weird episode. Yeah, this Yes, was. I end my enjoyed life. it. I enjoy the That weirdness. is literally a motto these days. End my life, No, end my let's not existence. joke about that. Let's not joke about that. Oh, yeah. I enjoy the weirdness. I hope our listeners also enjoy the weirdness because that's what they come for. They come for the weirdness. That's going to be our title. Yes, Good. you Done. come for the We weird. I don't know thrive why in the you do, chaos. but you come for the weird. Yeah. We I am thrive in questioning the your chaos. sanity, but you Yep. come for the weird. Okay. Let's round up this episode. We talked about being we're just defeated, feeling defeated. just for you guys, we're wrapping this up early because Abis की light जाने वाली है and I जा am चुकी genuinely क्यों sick. नहीं अब तक मुझे नहीं समझ आ रहा. हाँ, Abis मुझे light क्यों नहीं गई मुझे भी तुम्हारी? समझ नहीं आ रहा. Like K Electric, Let's not look tempt into fate. this. Light ले Let's इनकी not आप tempt वापस. K Electric. Light ले Let's- इनकी.
Like, Behral. are they accidentally being nice to me? Anyways, we talked about that. We talked about some lightly political stuff. Please don't cancel us. We're not even like politically active or anything. Anyways, follow us on Instagram. Subscribe. We love you. Enjoy the rest of your Sunday. Zayn is speaking for himself. Yeah. Let's end this Also, now. can someone send me some good food right now? I'm gonna cut Like कोई टिक्का right भिजवा at दे, कोई Umama when केक भिजवा Umama दे. starts speaking. I'm gonna cut it right where Umama starts speaking, and I'm gonna make Wazahat like put something in there. Okay.